नमस्कार फ्रेंड्स, नॉलेज मीडिया के इस चैनल में आज आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए सो दैट कि इस चैनल पर दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स, आज हम अपने इनकम टैक्स के थर्ड टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। फ्रेंड्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और गवर्नमेंट को इससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। इसमें कुछ डिडक्शंस इनकम टैक्स की ओर से दी गई हैं, जिनको हम मार्क करते हैं सेक्शन 30 to 43B। सेक्शन 30 एंड 31 हमारे को बताते हैं कि बिजनेस पर किए जाने वाला रिपेयर्स, इंश्योरेंस एक्सेट्रा एक्सपेंसेस आर टोटली अलाउड एज पर इनकम टैक्स प्रोविजंस। सेक्शन 32 बिजनेसमैन को अलाउ करता है कि वो जितना भी डिप्रिसिएशन बिजनेस असेट्स के ऊपर इनकर कर रहा है दैट इज अलाउड। लेकिन फ्रेंड्स, किसी भी टाइप का कोई भी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड एज पर इनकम टैक्स प्रोविजंस। आफ्टर दैट वी हैव सेक्शन 35। सेक्शन 35 बात करता है एक्सपेंसेस ऑन साइंटिफिक रिसर्च ऑन डिफरेंट heads by different institutions. Under this, we also get weighted deduction. After that, friends, we have section 37. In this, we talk about general expenses. They are allowed. Friends, after that, we have section 40, 40A and 43B. They expressly provide that certain expenses are disallowed as per income tax provisions. So अब हम ये सारे sections देखने के बाद ये कह सकते हैं that the businessman prepares a profit and loss account and here वो different expenses डालता है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो। यहाँ पर वो बहुत सारी इनकम डालता है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, और फिर वो अपना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालता है। लेकिन इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है कि अभी आप रुक जाइए, हम आपसे इस पर टैक्स नहीं ले रहे। हमने आपको डिफरेंट सेक्शंस में कुछ एक्सपेंसेस परमिट किए हैं और कुछ एक्सपेंसेस डिसअलाउ किए हैं, और वो हमने जैसा अभी देखा हमारे लिए है सेक्शन 30 to 43B, जिसमें कुछ एक्सपेंसेस अलाउड हैं और कुछ एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपनी इस बात को एक प्रॉब्लम से डिस्कस करते हैं। ये प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। यहाँ पर हमने डेबिट साइड में बिजनेस से रिलेटेड सारे खर्चे दिए हुए हैं और क्रेडिट साइड में बिजनेस से रिलेटेड सारी इनकम दी गई है। नीचे हमें ये बताया गया है कि बिजनेसमैन ने कौन कौन से खर्चे बिजनेस से रिलेट होके किए और कितने खर्चे एक्सेसिव किए गए थे और कितने खर्चे ऐसे थे जो बिजनेसमैन ने किए लेकिन उनका फायदा उसको बिजनेस में नहीं मिला। तो फ्रेंड्स, हम ऐसे शुरू करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम फॉर द
assessment year 2019-20 of Mr. X, और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द ईयर एंडेड और फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20. We start with net profit as per profit and loss account, that is 9,25,800. Here we add inadmissible expenses. Inadmissible expenses means the expenses which are disallowed under the income tax provisions. So here we are first watching that we are getting reserve for losses. So any kind of reserve is not allowed. So we add this reserve for losses. Then we have an excessive payment has been made to a relative to the extent of 4,200. That is excessive payment made to relative as per section 40A2. Friends, this 40A2 talks about the excessive payment made to relatives as compared to market rates. When we talk about 40A3, this 40A3 talks about when we make cash payment in excess of rupees 10,000, because as per income tax provisions in business, the cash payments are allowed up to the extent of rupees 10,000. So if we want to avail the allowance under section 40A3, in that case all the payments for business or profession should be made by an account paid check or demand draft or online method of payment. So this is 40A2. So I have made this solution. So this is 4,200. Then further friends, here it is given that advertisement expenditure includes 2,000 being cost of 4 diaries. These diaries have been given to the customers. So obviously we can infer that this is related to business. This is revenue expenditure. So this is fully allowed. If this is capital expenditure, then it is not allowed and we would have added. हमने इस खर्चे को यहाँ ऐड कर दिया होता, लेकिन ये डायरी वगैरह का खर्चा है, हमने इसको रेवेन्यू नेचर का माना है और इसीलिए हमने इसको अलाउ किया है. Now we move on to depreciation on plant and machinery. Generally what we do for depreciation, because any kind of provision or this depreciation given in P&L account is not allowed. So generally we add here this depreciation and then actual depreciation is deducted. But sometimes we can add less the actual difference. So we can do further. Now here we are adding, that is expenditure on acquisition of patent right. Friend, this is asset and the rate of depreciation is 25%.
एंड सिंस ये एसेट हमने परचेज की थी 30th जून को, सो दैट इज व्हाई वी कैन क्लेम द फुल ईयर्स डिप्रिसिएशन. So this is, the cost is 20,000, and on this 20,000, 25%, that is 20,000, 20%, that is rupees 5,000. So rupees 5,000 will be allowed and 15,000 will be disallowed. So now we move on to the next heading, that is lump sum consideration. Lump sum consideration for acquiring know-how. Since this is also asset, so we'll provide 25% of depreciation, but this asset was acquired on 10th March. As per section 32, we all know if an asset is acquired for less than 180 days, the depreciation is provided for half the rate. So that is why this is 50% of 25% of 80,000. And this comes to 10,000. So that means 70,000, 80,000 minus 10,000. 70,000 will be disallowed, and here it is 20,000 minus 5,000, 15,000 will be disallowed. And after that we have outstanding sales tax and excise duty. Friends, this comes under 43B, because 43B says then whatever is liability that should be paid up to filing of return of income, the date of filing of return of income. So here the date of return of income is, we can take like this, that the date of filing of return of income is 31st July 2019, or you can say like July 31st 2019. So here we are watching that up to 31st July the excise duty is paid 1200, and this 2000 is paid on December 2nd. That means after filing of return. So that means we can say that provision is 8,000, and this 8,000 only 1200 is allowed. So the remaining is 6,800 will be disallowed. So now we can see that salary, reserve for losses, fire insurance, advertisement, we have taken everything. So these are all about expenses. Now we add this thing, the total of all the inadmissible expenses comes to 1,10,500. And when we add in our net profit, so this gives us 10,36,300. Now we deduct income, those are not related to business or profession, from this, minus, that is short term capital gain of rupees 52,000.
Then we deduct the depreciation on plant and machinery. As we have provided in the profit and loss account the less amount of depreciation, that is 26,000. But as per income tax, this is 27,000. So we have to deduct 1,000 from here. When we deduct these things, we get the business income of rupees 9,83,300. This is our business income. Now we do computation of total income of Mr. X for assessment year 2019-20. Business income 983,300 plus short term capital gain of rupees 52,000. This gives us the gross total income of rupees 10,35,300. From this we deduct minus deductions under section 80C to 80U minus, that is A 80C. PPF. He has invested in PPF of rupees 50,000 and this gives us 9,85,300. Now we have to compute his tax liability. 9,85,300. First 2,50,000 nil. Next 2,50,000 at the rate of 5%, that is 12,500. Then we have the balance of rupees 4,85,300, 20%. This comes of rupees 97,060. The total is 1,09,560 plus 4% HEC. This comes 4,382. So the tax liability that he has to pay is 1,13,942. Rounded off, because liability is always rounded off, 940. So friends, in this method we calculate the income from business or profession for income tax provisions. नेक्स्ट एपिसोड में हम और प्रॉब्लम्स करेंगे. सो फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना नॉलेज को अपडेट करते रहिए. थैंक यू सो मच.
Have a very good time.